Good evening, candidates. I wanted to bring you here to tell you that in your interview, the expectation of Punjab National Bank is of a high order. ज़्यादा आपसे expect कर रहा हूँ. That is, आपको commerce, accountancy, ratio analysis, ये सब पूरा पढ़ के मन में रख के आप जाना है. और इसका बीच में आपको दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आंसर किया है. आपने देखा होगा. That is, what is the role of credit officer? Then how will you process a proposal? ये दोनों हमने दिया था. Is there anybody who has not seen that? Is there anybody who has not seen that report, that big one? I posted a video of those things covering those points. So this is how it goes. Credit appraisal process, and before that, say it is credit officer's role. Now, is there any doubt regarding that stage? Please raise your question. Or if you want to try telling about the role of a credit officer, you can try talking about it. Yes, please. Some new people have joined today. I don't know whether they have come. Those who have joined today, have you come, please? Anybody has joined today only, appearing for this? Otherwise, no problem. Now, do you have any doubts regarding this one? These are the points given for how will you appraise the projects. Here, this is what I have told you. Application is submitted, initial screening is done, credit investigation is done, then followed by analysis of financial statements, then assessment of repayment capacity, evaluation of creditworthiness, and then decision making, then documentation, disbursement after completion of formalities and documentation, then monitoring and follow up and post disbursement. This is what I have told you, and I hope you can know about it, because when they ask you to tell about how will you process a proposal, you can take an easy proposal like, say, car loan or housing loan, and then detail about it. For example, I give you this question: whose internet is good? You can speak now. Supposing you are getting a car loan proposal, how will you process that? What are the factors you will look into that? Please answer me. Anybody who wants to answer, Um, please raise also your Varun hand. Saxena this side. Varun Saxena, please tell me. Sir, if to assess this car proposal, first I will go through its income statements like salary slips, ITR. I will see whether he will be able to repay the EMI on time or not. Also, I will also see that existing EMIs are there or not any. If are there. Hmm. That is, you say that I will try to find out whether he has got any loans already for which he is repaying now. That's what you are telling, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then I think you could have added before starting, after satisfying about KYC formalities. For all the questions, you can tell this. After satisfying about the KYC formalities, like taking of Aadhaar card, PAN card, etc., then I will verify the salary slip of the party and the income tax return submitted by him, whether they are tallying, and then I will ask for CIBIL score. आपने उस पॉइंट को छोड़ दिया, वरुण. CIBIL Yes, sir. score. I will ask for CIBIL score
And if it is over 700 and all, it is good. And if it is slightly less than that, I will ascertain the reason why the CIBIL score is less. And as the situation changed, and will he be able to repay properly? I will ask him. Okay. You should tell like that. Now, anybody else would like to try telling about it now? Anybody else would like to try telling about it? Somebody who has done CA, costing, one who can talk confidently. Boliye. Anybody who has done costing? Anybody who has done chartered accountancy? Who is very good in accounting? Yeah, nobody is there. अच्छा कोई बात नहीं. Here, I have also stated it is important to note that specific procedures and criteria can vary between different financial institutions and the type of loan being applied for. Is it a personal loan or home loan or business loan, etc. Additionally, regulatory guidelines from entities like Reserve Bank of India and somebody's Reserve Bank of India um, also influence the credit appraisal, because कभी कभी वो लोग इंस्ट्रक्शन देगा इस सेक्टर को दो, इस सेक्टर को मत दो, इस सेक्टर में इतना मार्जिन रखना पड़ेगा, like that they will tell. So that is what. And I thought I can share with you one more point. This, I think all of you are aware of this. I have given you 3 videos. This will be 3 or 4 videos. This will be helping you what you should study, how you should study, what are the materials I have given you. Those who have joined recently, you also just go through this. Apart from this, I thought I can tell you, mm, I can tell you about this. This I have put it for everybody. See, the questions will be based on tell us about yourself, which bank you are having account, what is the difference between your bank and our bank, what are demand deposits, what are time deposits, what is CASA, what is FARA. FARA means fixed deposit account and recurring deposit account. Difference between banks and NBFC, white label ATM, then CBS core banking solution, CTS check truncation system. It is not, see, normally they will not ask you to explain about it. But if they ask you to explain, you must be able to tell what is CBS core banking solution. You should tell the name of 2 core banking solutions, Infosys, Finacle, and TCS banks, like that. Then mobile banking, internet banking, FASTag, NPCI, IRDAI. You must know where is the headquarters, who is the MD and CEO or chairman of that. ये सब देखने से better है. And you must also know what are the in the case of NPCI, what are the various platforms created by them, and then in the case of IRDA, what is their main role, what are which are the institutions they are controlling. Same thing with SEBI also. SEBI, BSC, NSC, Chief Justice of India, Vice President, MSME Minister, Principles of Lending, then term loans, OD, OCC, KCC, Kisan. Yeah. Now in Zoom. Yeah. Then OD, OCC, KCC, Kisan Credit Card, MSME, definition, balance sheet analysis, important ratios, why we should select you, achievements during the college, what you can give our bank if we select you. So this is routine. I am sure at least
2 or 3 questions out of this will come for you. And you are also requested to arrange for documents properly, dressing, be happy, be hopeful, be positive, concentrate on reading about your degree subject. Many of you have forgot, but of course, your original degree subject not required. Yesterday, one candidate was asking, Sir, I studied BSc Physics, I then did MBA. Will they ask about physics? Mostly they should not. So if they will not ask, if you are not going to tell I studied BSc Physics, उसको हाइड कर दो, खाली MBA के बारे में बात कर लो. Then be positive, concentrate on reading. Okay. Then native place, college, hobbies, family, basic banking, credit analysis, general awareness, current and static. Regarding current बोलने से तो budget जरूर important है. Budget में the one that I have already put for about 20 to 30 minutes, that is as given by the government. That is, they have prepared one PDF and sent it. उसमें से जो points important लगता है उसको prepare कर दीजिए. Invariably income tax का बारे में question होगा. Then मुद्रा लोन का बारे में हो सकता है. MSME के बारे में हो सकता है. Then about the training they are giving, skilling training, ये सब का बारे में वो लोग करेगा नहीं करेगा, बट वो सब का बारे में आप प्रिपेयर करके बोलना है. Then I thought, yeah, this is for our export people, but इससे आपको आने का उम्मीद ज्यादा नहीं है. फिर भी you can know what is CCGC, what is Exim Bank. You can know about that, why a country is exporting, why a country is importing, what is the current inflation level, what is the current GDP level, and all these things you must be able to know. And this is one video I have posted about general interview, that is introduce, tell your those people who are working for them, this question will come. What are your responsibilities? Where do you see yourself in 5 years? Punjab National Bank people, you can tell after 5 years, I see myself as manager. I would have passed JAIIB and CIIB and be eligible for promotion. So I would have been promoted as manager credit. And after 10 years, I see myself as a senior manager because I would have passed JAB, CIIB, and I would have been promoted. Then what is CRR? This simple question. What is priority sector lend? This is very, 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 very important. I think lot of materials are there with you. Otherwise, you can just go through. I think in one promotion material also it is given. Please go through that priority sector lending. They do ask you, the first question they will ask, why priority sector? Why priority sector? Because those sectors were not getting banking finance. And in order to encourage them, because they are the backbone of our economy, so the agriculture, MSME and all. So the Reserve Bank of India said 40% of the total adjusted net bank credit should go to, or simply say 40% of total advances should be given to the priority sector. Then once you tell this, they will ask, what are the 8 priority sectors? Mug up parlo. That alone is not sufficient. Under agriculture, there are certain subdivisions. Agriculture must be given 18%, then 7.5% must go to some 10%, like that it is there. Please go through that. Likewise, export may kya instruction. You must also know if they have given some limits. For example, in the case of education loan, 20 lakhs is the limit up to which it is eligible
for being classified as priority sector. In the case of housing loan in urban, it is 35 lakhs. Rural areas, it is 25 lakhs. Then total project cost also must be told. So those points, you must mug it up thoroughly. You must be able to tell the eight sector. And sometimes when they ask definition of MSME, you should tell, you must remember to tell that Mudra loan, there has been a change in the case of Tarun loans where people have repaid properly. They can be given now 20 lakhs. Like that, you should be able to tell. And when we talk about MSME, there can be a reference about one scheme known as TR small EDS. So what is that scheme? It is about collection of bills. So uska bare mein, I think I have been sharing the link in our PNB group. So candidates, whenever I am sharing a link, it is because that particular question is important. I am asking questions to a candidate in the mock interview. That is why I am sharing it to you. You must go through that link and try to improve your knowledge. Then this one, Sukanya Samriddhi, just for sample I gave, they can ask you anything like this. You must be thorough with the postal saving schemes like Public Provident Fund, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificate. These things you must know what is the minimum amount, what is the interest rate, what is the period. ये सब आप लोग prepare करना पड़ेगा. इसीलिए आफ्टर द सुकन्या समृद्धि हमने दिया है PMJJBY, PMSBY, अटल पेंशन योजना. ये सब का देन देयर इज वन सॉवरेन गोल्ड लोन. ये सब का बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ना है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक इज अ गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक. देन इस क्वेश्चन मोस्टली पूछेगा नहीं पूछेगा, फिर भी हमने दिया है. इसमें फॉर्म 15G 15H क्या होता है? फॉर्म 15G फॉर्म 15H कैसे कब आएगा? जब से एक आदमी ने बिलो 60 इयर्स उनको फिक्स्ड डिपॉजिट से एनुअल फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट आता है 40,000 का ऊपर होने से, बैंक विल डिडक्ट 10% of the interest paid. Up to 40,000, they will pay full interest to you. The moment another interest is paid, now you are going to get 44,000. Then they will deduct from that itself 4,400. उससे नहीं होगा. Imagine after 40,000, you are now getting 45,000. They will deduct 4,400 and credit only 600 rupees to you. And for the future future interest, they will deduct साथ साथ में 10% डिडक्ट कर लेगा. समझ गया? But this 15H क्या चीज है? 15H is for old people like me. 60 साल का ऊपर, that is 60 years का ऊपर होने से, for them up to 50,000 rupees interest from fixed deposits from one bank is exempted from income tax. So that bank will not recover the TDS. TDS means 10%. If you are not having PAN card, such cases TDS deducted will be 20%. Then if you are not liable for the income tax, you can always file an income tax return and get a refund. Then next question is, can you relocate on selection to other city or district? Without hesitation, with a smile, you must tell, yes, sir. I will go to any part of our country. Happily bolna hai. But
लेकिन रियलिटी में क्या होता है, फेडरल बैंक में ये एक लड़की को ई रोड से क्लर्क नौकरी मिला, उनको पोस्टिंग दिया तेनी, तेनी टू फिर ई रोड खाली 5 घंटा है। वो अभी हमको फोन करके पूछता है, साहब साहब हमको क्या ई रोड का पास में मिलेगा, कोयम्बतूर में मिलेगा, 2 घंटा में हम जा सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। हमने बोला आप ट्राई कर लो, वो लोग देने से ले लो, कोई बात नहीं। ये पूछने का रीजन ये है, सर जी हमारा हम हमारा मैं लड़की है, मेरे को भी 5 घंटा पास में डाल दिया, लेकिन किसी लड़का को सेम सिटी में दे दिया, वो तो ई रोड में रहते हैं, उसको ई रोड में दे दिया। ऐसा कंपेयर करते हैं, ऐसा अभी कंपेयर नहीं करना। आपने इन द इंटरव्यू हंस के बोलना है, आई एम विलिंग टू टेक इट अप, because if you say no, jarur they will give low marks, and you will not have you will not be able to get selected. As you know, in this interview we must score 50% and above. If they want to reject you, they can give you 49 marks and then reject you, even though you have scored the first mark in the written test, you will not be qualified. In the case of, I think, scheduled caste, scheduled tribe, it is 45% or so, whatever it is. Then, what is the role of a credit officer? This we have already discussed. What are the changes in budget? I told you already. Then a budget regarding Mudra loan discuss ho gaya. Objectives of budget, 4 points. That budget का starting का समय पर ऊपर में 4 points दिया है. That is some, what is that, some three ratna something, some scheme ko, what is that, some Hindi word, what is the Hindi word for the vikasit, or what is that, anybody tell me, what is the budget, this thing, vikasit or what? Hello, bolo na, budget, budget mein what is the objective of budget? It is, that is budget key features PDF. This is purana wala budget. What is it? अभी आ गया. Budget key features. Some year they are telling, I am not remembering. हाँ, विकसित. अरे भाई, आप लोग ये वर्ड को यूज करना है, विकसित भारत. हमारा बजट का परस्यूट इज विकसित भारत. आप बिलीव करते हैं, नहीं बिलीव करते हैं, कोई दूसरा बात है. आपने ये बोलना है, ये विकसित भारत का अंडर में हमारा प्रायोरिटी गिवन फॉर पुअर पीपल, गरीब पीपल. देन महिलायन, दैट इज वुमेन के लिए, और युवा, यूथ के लिए. देन अन्नदाना, अन्नदाता, दैट इज फार्मर्स के लिए हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहा हूं. और एम्प्लॉयमेंट इम्पोर्टेंट है, स्किलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, एमएसएमई को इम्पोर्टेंस है, और मिडिल क्लास को भी इम्पोर्टेंस देता है. इसमें chief finance minister has told yesterday in an interview, I want to give more for middle class, but I am not able to. There are limitations. That is why I have increased the standard deduction from 50,000 rupees to 75,000, so that all those people who are drawing salary or pension, they will get some rebate. That is what it is. Okay. And those agriculture graduates, आप लोग इसका बारे में पूरा मन में रखना है. या एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग में इसको मगअप करना है. देन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में क्या देता है, दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइकवाइज एक बार का 2 बार पढ़ लीजिए. अर्बन डेवलपमेंट में वो बोलता है
स्टैम्प ड्यूटी कम करने का बोलता है, स्ट्रीट मार्केट एनकरेज करता है, लाइक दैट। हम सॉरी, हमारा मन में ये सब याद नहीं रहते हैं, इसलिए हमने नहीं बोलना पाते हैं। आप लोग जब जा रहे हैं, यंग पीपल, आप पढ़ लीजिए, विथ अ व्यू यू आर रिमेम्बरिंग इट, आपको जरूर ये यूज हो जाएगा। ओके, देन प्रायोरिटी ए वाला भी आप लोग बोलना है। सम 11,11,111 करोड़ रुपया हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। ये आपको कट करने के लिए वो लोग ऐसा पूछ सकता है, अरे भाई इतना रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों देता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना रुपया देता है क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, ट्रांसपोर्टेशन जल्दी हो जाएगा, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उधर में आके डिपॉजिट करेगा, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। ऐसा मपी आप लोग बोलना है। सो प्लीज गो थ्रू दिस, प्रिपेयर कर दीजिए। वेरी गुड। एंड देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट is this one. Yeah, I have told you this. Yesterday, I was gathering some ideas about, say, the question of uh, financial analysis. उस समय पर we can cover all these points. Financial statement analysis, ratio analysis is important. And while analyzing the statements, we must be able to decide which form of credit the borrower is asking. Is he asking overdraft, or is he asking cash credit, or is he asking term loan? Then usko credit appraisal karna hai. Checking the statements about financial position of borrowers is what is known as appraisal. If it is a new borrower, thoroughly checkup करना है। हो सकता है ये वाला एग्जिस्टिंग borrower है, तब भी हम लोग उसको रिव्यू करवाना है और रिन्यूअल करवाना है। कभी कभी उनको एनहांसमेंट देना पड़ता है, दैट इज इंक्रीज। देन उस समय पर क्या होगा, पार्टीज विल गिव द डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक। For example, if it is house property, title deeds, then engineer valuation, salary slip, income tax return, etc. In the case of MSME companies, their balance sheet, funds flow projection, etc. Then we are supposed to not only disburse the advance, but monitor the existing customers, borrower, and sometimes what happens, some company may, well, they want to change from another bank to our bank. उस समय पर we have to check up whether he has been making repayment of term loan properly. If we go through the CIBIL score or CRIL score, we can know whether he is doing correctly. Then bank cannot give loan for a party doing illegal activity. This point we have not discussed so far in many of the classes. जब प्रपोजल आता है, उसको आप लोग देखना है whether the party is doing a business which is permissible for finance. Supposing he is doing smuggling, no, we cannot give um, we cannot give finance for such party. Then previous record not good होने से तो पैसा नहीं देगा। वो क्या बिजनेस करता है, उनको पास्ट परफॉर्मेंस कैसे है, व्हाट, एंड उनको पूछना है आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर। ये फ्यूचर में आप बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द रीजन दैट मेक्स यू इंक्रीज योर एक्सपेक्टेशंस। लास्ट ईयर में आपको सेल इतना था, 10 लाख था, इस नेक्स्ट ईयर में आपने 30 लाख बोल रहे हैं, ये 3 टाइम्स कैसे आपको इंक्रीज होगा? उनको डिटेल्स पूछना है, सिबिल रिपोर्ट देखना है। देन समथिंग, इफ द सिबिल इज लेस देन 700, उनसे बात करना है, ये क्यों कम हो गया? वो बोलेगा हमारा एक इंस्टॉलमेंट पेंडिंग हो गया था इसी वजह से।
आगे से हम तो प्रॉपरली देते हैं, अभी हमारा देना का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वो सेटिस्फाई करने से वो सही बात हो जाएगा। सिबिल एमएसएमई रैंक, इसको बोलता है CMR। CMR इसका बारे में भी कल हमने लिंक्स आपको शेयर किया है। किया नहीं है? अच्छा, अभी दे देगा। अच्छा, ये पूरा मटेरियल को हम आपको व्हाट इज दैट आवर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा। देन सिबिल स्कोर इज लेस बट इज केपेबल ऑफ रीपेइंग इन फ्यूचर, वी हैव टू satisfy Krilk. This is a score which we have to see if the borrower is taking more than 5 crores. इसका बारे में डिटेल्स इधर मिलता है। Then we should also check up whether the account is in SMA status. SMA means special mention account 012, उसको देखना है। NPA होने से तो नियर बाई नहीं जाना है। देन व्हाट इज द सिक्योरिटी ऑफर्ड देखना है। वो सिक्योरिटी का टाइटल क्लियर नहीं होगा तो उसको नहीं एक्सेप्ट करना है। एंड वैल्यूएशन भी ठीक से नहीं हुआ तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। देन इस और एक बात भी आते आते हैं, लिमिटेड कंपनी होने से उसमें शेड्यूल 3 फॉर्मेट ऑफ लिमिटेड कंपनी में डिटेल्स मिलता है। वो उसको ऊपर में हम लोग वेरीफाई करवाना है, व्हाट आर द अदर एक्सपेंसेस, व्हाट आर द टैक्सेस एटसेट्रा। जस्ट मेक अ रेफरेंस अबाउट दैट, दैट विल डू। Based on that you have to make a comment and then make ratio analysis also। not only that, इस पार्टी कोई दूसरा बैंक से हमारा बैंक आएगा तो उनका प्रीवियस बैंक में क्या स्टेटमेंट्स आए उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने से उनको अकाउंट में कुछ चेक्स रिटर्न हुआ है वो गलत है। नॉट ओनली दैट, जो डिपॉजिट उन्होंने कोई कस्टमर को डिपॉजिट किया है उस चेक रिटर्न हो गया, तब भी थोड़ा सोचने पड़ेगा। अरे, ये पार्टी को कस्टमर तो अच्छा कस्टमर नहीं है, वो चेक्स रिटर्न हो रहा है, लाइक दैट। एंड हियर अगेन वन मोर लिंक, दिस इज अबाउट TREDS, about MSME। this also I have given, I will give all this lot in our WhatsApp group now। I will give it in our WhatsApp group now। Please take care of that and prepare। हमारा क्या है? See, you people, whenever you are attending, you must attend with confidence. And whenever you speak, you must use catch words. When they are asking about budget, you must tell budget was presented by Mrs. Nirmala Sitaraman. You must use Mr. Mrs. And another important point I wanted to tell you that, I have posted a video giving the names of 50 prominent people. Who is who? I think all of you know. Anybody who doesn't know about it, please raise your hand. I have posted a video. I have taken it from Mica magazine। आप लोग से नहीं हुआ, बाद में हमारा ड्राइवर को चेन्नई में बता के उन्होंने एक बुक शॉप में जाके उधर से उसको 41 पेज को जरा स्कैन करके हमको भेजा है। It is available in all shops, you can buy that magazine if you buy that magazine। लेकिन करंट अफेयर सब थोड़ा आजकल आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि हम लोग ऑल करंट अफेयर्स स्निपेट्स में देखते हैं, इसलिए वो पुराना हो जाता है। लेकिन उसमें आपको अंग्रेजी का पास में कुछ होगा, रीजनिंग का पास में कुछ होगा, दूसरा वाला क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर वगैरह। एंड देन क्वेश्चंस भी मिलेगा, 200 करंट अफेयर क्वेश्चंस देगा, आंसर देगा। ये आपको यूज होगा फॉर योर मेन एग्जामिनेशन फॉर RRB एंड IBPS एंड ऑल। आप लोग, आई एम नॉट एन एजेंट ऑफ महेंद्रा इंस्टीट्यूट, बट हमको दैट पोर्शन इज, आई लाइक इट वेरी मच, इसलिए हमने सब्सक्राइब किया है।
हमने जीके टुडे को भी सब्सक्राइब किया है. If you find some interesting article coming in that, tell me. I can see it here. But the problem is I'm not able to open it fully. It is coming as a small one. So these are the points I thought I must share with you. To be frank, in this group of 200 plus people are there with us out of the 2000 people called for interview. More than 10% of you are here, and I really thank you for giving me so much confidence in me and coming here. There are some children who have joined us right from the beginning, June or July. उस समय पर पे आप लोग आए. So and I have been giving so many classes like this. So whatever is possible, you listen. When you listen, take notes so that you don't have to listen that again. So like that, you have to prepare for this interview. I now regarding this one, please be ready with your documents. You must have studied MBA 2-year degree. It must have finance as your main subject. If your degree certificate is not having, get it from your college. Then your OBC certificate must be as per the government format or IBPS format, and EWS certificate should be relating to last year, and income certificate is also required for that. These are practical problems which you may be facing there. I am very sorry, but I suggest you take all originals whenever you are traveling by train or flight. Candidates, please take care of the documents. That is your certificate वगैरह को please take care of it properly. आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, पर्स, credit card, debit card, please take doubly care. Don't allow your attention to get deviated. This is very important. I am telling you because based on experience, where some candidates have lost certificates and they could not attend the interview. ऐसा नहीं होना है. Please be careful and be always cheerful. And when you come out of the room, also be cheerful. मिलने से अच्छा है, नहीं मिलने से आगे और अच्छा कुछ जॉब आपको मिलेगा. You will get some other better offer in the next one. So this is what you should do. And any other questions you have right now, please tell me. I have given today interview for a candidate at 6:15 only. चाहिए तो उसको postpone कर लेगा, कोई बात नहीं. पूछ लीजिए, बोल दीजिए. अब 6:45 दिया है, उसको postpone करेगा विशाल वाला. बोलिए, एनी डाउट्स, जल्दी बोलिए. सर एक मेरा डाउट है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. हु इज स्पीकिंग? सर मेरा जो सर एमबीए का फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है उस पे हिंदी में नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है। नाम गलत? नाम नाम जैसे कि हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है सर। उसको हम यूनिवर्सिटी में ले गए। इंग्लिश में सही होगा तो चल जाएगा, चिंता मत करो. ठीक है सर। आप थैंक आप यू सर। आप उनको मत बोलो साहब जी ये हिंदी में गलत लिखा है, ऐसा मत बोलो. अब अंग्रेजी में सर तो सही होगा तो ऐसे हो जाएगा, चिंता मत करो. सर ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट में और एमबीए के सर्टिफिकेट में दोनों में अंतर है। ग्रेजुएशन पे सही लिखा हुआ है और एमबीए पर गलत लिखा हुआ है हिंदी में। पढ़न पढ़न ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में सर, ग्रेजुएशन का जो डिग्री सर्टिफिकेट है उस पे हिंदी में नाम सही लिखा है, लेकिन एमबीए के डिग्री सर्टिफिकेट में हिंदी में नाम गलत लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. दिस थिंग्स डोंट वरी. चिंता ओके ज्यादा सर। मत करो, चिंता ज्यादा मत करो. ओके सर, थैंक यू। इट डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर सिटिंग देयर. वो हमारा मपी होने से तो अंदर अलाउ कर देगा. वो हमारा मपी नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. कोई बात नहीं. सर लेट एक अस कोर्ट से लेट सर अस नोटरी से भी बनवा लिए हैं सर, नोटरी से जो ठीक ठीक है. है। वेरी गुड. वो तो अभी आगे मत दिखाओ, वो डिस्प्यूट करने से दिखाओ. यस सर, थैंक यू सर। वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीबडी एल्स? प्लीज टेल योर नेम एंड आस्क. I am not able to see the names because some names only are seen here. Anybody else? Please tell me.
Sir, No am doubt. I audible, sir? Yeah, audible. Were you speaking? Yes, sir. Rimli Sharma speaking, sir. Yeah, tell me. सर एक्चुअली मेरा जो एमबीए का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वहां पर मेरा स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है। तो मैंने सर डिपार्टमेंट का जो एचओडी है, एचओडी से सर एक सर्टिफिकेट निकाल लिया है टू होम इट में कंसर्न बोल के, ऐसे मतलब डिपार्टमेंट का एचओडी का साइन है और वहां पर लिखा हुआ है कि इक्वल वेटेज है बोल के मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वहां पर। तो वो वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या सर? चल जाएगा, 99% चल जाएगा। I ओके am सर। एचओडी I am praying to God, all of you should not have problem on account of such certificate. भगवान को प्रार्थना करता हूँ, इससे ज्यादा क्या बोलेगा। So हाँ 99% हो जाएगा। हाँ सर, एचओडी ने दिया है, वो वहां पर लिखा हुआ है, मतलब मेरा रोल नंबर के, मतलब मैं रेगुलर स्टूडेंट था, ये सब लिखा हुआ है मतलब वहां पर। Very सर good. That's good. That is good. ओके That is what. Very nice. Anybody else? Any questions? Any doubts? सर Yeah. सर मैं प्रिया ठोंबरे बोल रही हूँ। Tell me. प्रिया ठोंबरे बोल रही हूँ। Yes, please. मैंने Yes, आज please. ही आपका वो इंटरव्यू में ज्वाइन किया है, तो अच्छा, इंटरव्यू मेरा you are that girl. अच्छा. हाँ Somebody joined today only. Yeah. आप लोग का, say the important point to be told by me is that I have given you in the WhatsApp itself the link of 4 important videos which will guide you how you should study. These 4. Are you seeing on the screen now? यस सर। These 4. इसको prepare करना है। इसका अलावा then this also I will give once again these things in our WhatsApp में दे देगा। आप इसको भी उधर रख के पढ़ लीजिए। आप हाँ I have been telling about this from the beginning. Supposing you were not there, कोई बात नहीं, अभी इसको दे दिया। एंड ये पॉइंट्स भी हम इधर में डाल देते हैं हमारा ग्रुप में। व्हाट्सएप का प्रॉब्लम क्या है, पुराना वाला आप देख सकते नहीं है, नया वाला ओनली देख सकते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। एंड टुडे वंस अगेन आई एम posting all these things. ओके Questions will be this not required for you. This one also I will give you this 15, and this one also I am giving in our WhatsApp group. सबको मिल गया वो वाला। and इसका अलावा what is it, 1 minute, hold on, ये वाला दे दिया ये हमने। भी आज ही I ज्वाइन किया think सर। this one I have already given you. This one I just now I have posted it already. Please prepare, because all these days I was not telling this much in detail about how we have to process the proposal, analyze the proposal. So I was looking, yesterday I was talking to a guy who has worked in credit, and after talking to him, I got some idea. So I made this. Okay, please prepare. ओके Priya, are you clear हाँ about it? You are from which state, यस Priya? सर। You are from which सर state? आपने ना मेरा इंटरव्यू कल आपने ना कंडक्ट किया है, मतलब 27 को बोला है ना सुबह में कल। Acha, I have given you date as 27. That is first mock interview. सर मेरा है ना सेबी का एग्जाम है सर, कल सुबह में 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। Tomorrow. यस So tomorrow, इसका मतलब ये है, it will not be possible for you to come on 27th, correct? हाँ यस सर, तो संडे को रख अच्छा, सकते हो। wait a minute. आपका नंबर 93101 है? एक मिनट हाँ चेक कर लेते हैं। चेक सेल फोन नंबर। अच्छा 9370138187। 93, या उसको कट कर देगा। अरे बाबा, आप हाँ तो आपका नंबर बोल दिया, कोई दूसरा लड़का कोई कैंडिडेट से फोन आएगा, अटेंड मत करो, ठीक है? नहीं नहीं सर बट ये वीडियो तो हम जरूर डालना है, क्योंकि ये सबको हाँ यूज होगा, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको 28 तारीख में देगा। 28 ओके तारीख में देर इज अ टाइम अवेलेबल, 7:45 PM। ओके चलेगा सर। I am putting you there, but
ओनली प्रॉब्लम इज 28 से क्या होगा, हर चीज जल्दी जल्दी रहेगा। आजकल तो पहले तो हम आधा घंटा करते थे, कभी 20 मिनट्स करते थे, आजकल से 10-12 मिनट होगा। इसका अंदर ही आपसे हम मैक्सिमम पॉइंट्स ले लेगा। बेस्ट ओके ओके विशेस, सर। गॉड ब्लेस यू। प्रिया, यू आर फ्रॉम विच स्टेट? महाराष्ट्र सर। वेरी, व्हाट इज द स्टेट? उत्तर महाराष्ट्र महाराष्ट्र। Maharashtra. Either because of हम्म sound it is not coming correctly. Maharashtra, good, good. हम्म, Maharashtra हाँ। people are rich. Maharashtra people are rich people, na? Correct? हाँ, अंबानी है, यस। अंबानी है, अडानी है, शाहरुख खान है, हाँ, हाँ, बिकॉज वो अमिताभ, मुंबई में अ- आता है ना सर, इसके लिए अमिताभ मुंबई है बच्चन ना। है। Anyhow, best wishes, best wishes. God bless Good you. evening, sir. थैंक यू थैंक Good evening. Yes, what is the doubt, please? Sir, please tell me the name of important ratio for PNB credit officer. Name of important. हाँ, मतलब भी रेशियो, जो भी रेशियो इम्पोर्टेंट है उनका नाम जानना चाहूंगा सर। So इसलिए तो there is a video posted on 1st June, 2nd June, 1st June and 2nd June में two three videos have been posted covering about, say, profitability ratios, leverage ratios, solvency ratio, like that. सर इफ उसको पॉसिबल तो प्लीज रीसेंड सर इन अभी व्हाट्सएप ग्रुप। अभी डाल देगा, अभी डाल देगा। ओके ओके, थैंक यू एक सर। एक मिनट। अच्छा, अदरवाइज निगारिका, निगारिका, you are there now? Is she there? Yes, sir. निगारिका, that 1st June or 2nd June, that बैलेंस शीट का वीडियोस लिंक हम लोग का ग्रुप में डाल दो। Okay, sir. नॉट ओनली दैट, हमारा प्रमोशन बुकलेट है ना, जिसमें 97 लास्ट फ्यू पेजेस में वो रेशियो एनालिसिस है, उसको भी वो रेफरेंस उसको, दैट दैट बुक का, दैट इज देयर इन बैंक प्रमोशन बुक, उसको लिंक दे दीजिए एंड टेल देम बैंक प्रमोशन बुक दिस पेज, ऐसा बोलने से हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। सर, जो 15 क्वेश्चन लिए थे आपने अभी बताए, वो डाल दिए क्या? हाँ, 15 क्वेश्चंस डाल दिया, नहीं डाल दिया तो ओके। और एक बार डालेगा। सर डाल दिया, डाल दिया। डाल दिया, डाल दिया तो फाइन, वेरी गुड। व्हाट हैपन निगारिका? बहुत दिन हो गया, आपको देखा ही नहीं, हम क्यों, क्या हुआ? सर नथिंग, आई वाज बिजी इन प्रिपरेशन। सर मेरा 2 को ही इंटरव्यू है। अच्छा अच्छा, योर्स इज जल्दी जल्दी इंटरव्यू जाता है, कोई बात नहीं। सर वेरी Because to be honest, this is a very sincere girl who came to us as first few candidates, and she has been helping me a lot in getting these things done, though not much, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, फिर भी okay. I bless you, best wishes. थैंक यू सर। Thank you. Anybody else? Any questions? गुड इवनिंग सर। सर, Yeah, हेलो सर। yes. सर मटेरियल्स और वीडियो सर कहाँ पर मिलेगा? मैंने आज ही ज्वाइन किया है सर आपका क्लास सर। अच्छा, एक मिनट करो जी। वो और तो ग्रुप में भी सर मैं add हूँ सर, प्लीज काइंडली जॉइन आवर ग्रुप, प्लीज जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। please join you. You will कैन get यू WhatsApp all सेंड the links there. द what's लिंक व्हाट्सएप ग्रुप? link though I have given you along with the many links given. There will be one point number 3. In that point number 3, credit officer interview folder one आएगा। Second one, credit officer interview videos आएगा। उसमें से आप देख सकते हैं। नहीं होने से भी अभी वीडियो के लिए कोई तकलीफ नहीं है। अभी देखिए, हम साथ साथ दे देते हैं, बिकॉज आई एम नाउ ऑन आवर ग्रुप, आवर दिस थिंग प्ले लिस्ट को अंदर जाते हैं। प्ले लिस्ट में पंजाब नेशनल बैंक, इसका प्ले लिस्ट लेते हैं। एक मिनट, पंजाब नेशनल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर, या I am taking the link and I am giving
in our Punjab National Bank group अभी साथ साथ दे दिया जी PNB. Okay, आपको दे दिया. And you will get you want to know the credit officer folder that is there in the material given to you. Point number 3. Point number 3 बोल के 1 minute. If I can get you here itself, अभी दे देगा. Point number 3. I have to go for breakfast, then come for the next class. Just a minute. एक मिनट. अरे भाई आ गया. Shall I send the whole book 106 or only the link? 10 पूरा that book alone you send ना. Okay, okay. Otherwise इन लोग का confusion हो. अच्छा देखो, this is what is I am telling credit officer interview folder and also videos. Kindly do not share with others. These have been shared for your sake only. Priyanka or Priya, whatever it is. So take care. Anybody else? Any other question? Murali, क्या question है बोलो? Hello, sir. हाँ. Yes, sir. Sir, As per the priority sector one. You Sorry. want priority As per the sector? priority sector. You No, want no. for priority? One question, sir. बोलिए. In banks has to give 40% lending to priority sector, right, sir? Correct. What if banks fails to give this percentage, meet this If the bank net credit? fails to give the credit, they can take from NABARD, Rural Development Bond, or They have there to is buy the loans from NABARD, or they have to park their money? they have to invest in those bonds, Rural Development Bond. Apart from that, there is one more concept known as priority sector lending certificates. That is where some banks have given more than 40%, they can sell some portion of that to the other banks. They can borrow from them. So like that, there is one more new concept has come. If you search in Google, if you search in our Google, you will get that. Nigarika, you know about that? Priority sector lending certificate. उसका बारे में पढ़ा है? The priority sector lending certificates, yes. उसको बारे में भी थोड़ा लिंक होगा तो हमारा ग्रुप में डाल दो जी. Sir, I do not have any link. I just know about it. बोलिए क्या है, क्या चीज है, बोल दीजिए अभी. सर जब बैंक्स अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का, तो वो दूसरे बैंक्स से एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं और सर्टिफिकेट के रूप में ले लेते हैं, जिससे जो जिन बैंक्स का टारगेट ज्यादा पूरा हो चुका होता है वो उन बैंक्स को बेच देते हैं एक सर्टिफिकेट के रूप में. Correct. I am showing on the screen now. Is the screen visible? I think it may not be visible. अभी आ गया हमारा. Murali, please see. Priority sector lender Yes, sir. certificate. This is apart from rural development bond. That is one thing. Apart from that, priority sector lending certificates are financial instruments that can be borrowed against by banks in India, allowing them to make their target and sub-target goals in terms of loans being offered. समझ गया? So I am giving this one priority sector lending certificate overview. I am giving in our WhatsApp group, Mr. Murali. Yes, sir. आप देख लीजिए. Best wishes. Thank you so much, boys Apart and from- girls. Yeah. sir, I Yes. have one Apart from question. this, I also heard that banks has to invest to meet that criteria. Banks have to park their funds in NABARD or SIDBI. Is it right, sir? No. Where NABARD they get lower interest. No. There is no need for investing in NABARD if they can get this PSLC. लेकिन ये तो ज्यादा नहीं मिलेगा. ज्यादा तो नहीं होता है ना. बैंक्स मैक्सिमम 42%, 43% देता है. इसीलिए थोड़ा से only they can share. So best option for banks is to invest in rural development bonds.
Okay. Okay, sir. Yeah. Please go to Thank you, sir. nabard.org.in and search about rural development bonds. Okay, sir. Yeah. Best wishes. I will come for गुड इवनिंग सर। next candidate 6:45. Yes, please. सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर मेरा थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट बैक रह गया था, तो जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट पे 80 केटी लिख के आया है, और जब वो क्लियर हुआ तो मुझे नया रिजल्ट मिला। तो शुड आई नीड टू सबमिट द 80 केटी रिजल्ट आल्सो और द न्यू वन? You will have to present the entire lot. ओके, 80 केटी होगा तो भी देना ही? Now, have you cleared MBA with 60% and above? यस सर। Then okay, no problem. If you have passed MBA with 60% above, they have not asked in the first attempt. So no problem. बट Okay. सर 80 केटी का देना पड़ेगा या नहीं ग्रेजुएशन में जो है, क्योंकि मेरे I पास don't know. क्लियर वाला तो है। No, etiquette means failed certificate. That's what you say. हाँ, एक सब्जेक्ट रह गया था। यस सर, एक सब्जेक्ट रह गया था But जो मैंने नेक्स्ट ईयर क्लियर किया था। दूसरा सब्जेक्ट का मार्क तो उसी पर होगा ना। हाँ, हेलो, मतलब सर? if you have written 5 subjects, other 4 subjects जो पास कर दिया वो तो उसी पर होगा ना। हाँ, नए पे भी आया सर वो, और ओल्ड पे भी है। अच्छा, तब तो नया वाला शो कर दो बस। क्योंकि वो थोड़ा बैड इंप्रेशन रहेगा ना 80 केटी कोई दिखा कोई दिखेगा बात नहीं, कोई बात नहीं। I don't know. I thought you will be having second certificate with the latest subject only. If you are having the second certificate full form, you can produce that one. तो। ओके सर, ओके सर। Thank you. Thank you, Bye sir. bye. Best wishes. Thank you. I'll be online say after 7 o'clock or so because अभी देरी हो गया. I have already अभी कितना बजे है? 6:30. 6:30. यस सर। हाँ, हम तो 7 बजे